Hey everybody, I'm back after a long time, and in this video I'm showing you how I made this beautiful clip. So to begin, I'm making this chain. You can see the process. It's like when we tie a knot, but like a half knot. You don't pull out the complete thread. I can show you one more time. Yeah, just like this. You don't pull out the complete thread, and now you chain 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Okay, so I have done 13 chains. Now what I'm going to do is stitch in the back loops. तो ऐसे मैं बैक लूप आई कैन शो यू सी ये वाले बैक लूप्स के अंदर अब मैं स्टिचेस बनाऊंगी. Okay, so skip the first chain and in the second chain make a stitch and pull out from these two. Yeah, okay, so you'll make 11 stitches just like this one, and you can also put stitch marker or safety pin, anything on the first chain so you know where you started. वैसे तो इसके अंदर ऑलरेडी यू विल नो ओनली, बट अगर आप बहुत बिगनर्स हो तो आप एक स्टिच मार्कर या ऐसे कुछ फर्स्ट चेन जब आप बनाते हो उसके अंदर रख सकते हो. ओके, सो दिस इज़ माई लास्ट चेन. इसके अंदर मैं 3 स्टिचेस बनाऊंगी. ठीक है, आफ्टर 11 stitches make 3 stitches in your last chain. And 3. So now pull out the thread and we will continue our stitches. अभी we need to make 10 stitches. ठीक है, तो 1, 2, 3 and the thread that is hanging ना, उसको आप stitches के साथ साथ ही मतलब उसके साथ साथ में ले लो ताकि वो hanging ना रहे. It gives you a nice finishing. Okay, so I have done 10 stitches. Now in the last one I am going to increase. That means एक ही स्टिच में मैं 2 स्टिचेस बनाऊंगी, 1 एंड इसी के अंदर 2. ठीक है, सो माई फर्स्ट रो इज़ डन एज यू कैन सी. नाउ अभी मैं इसको एक स्लिप स्टिच दूंगी. जो हमारा फर्स्ट चेन है उसके अंदर आप ऐसे थ्रेड निकालो एंड देन इसके अंदर से निकालो. दिस इज़ अ स्लिप स्टिच एंड नाउ यू चेन अगेन. यहाँ से हमारा सेकेंड रो स्टार्ट होगा. So in this first row, first chain you make 2 stitches, 1 and इसी के अंदर 2. You can also again put a stitch marker कि आपका stitch कहाँ से start हो रहा है, row कहाँ से start हो रहा है. Now continue making your stitches. You will make 10 stitches. आफ्टर दैट दीज 3 स्टिचेस ना इसके अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे, हर एक स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे. सो नाउ 1 एंड इन द सेम स्टिच 2. नाउ अगेन 1 इन द नेक्स्ट स्टिच एंड इसी के अंदर 2. अगेन 1 एंड सेम स्टिच में 2. सो हमने 3 स्टिचेस में इंक्रीज़ किया है.
Now continue with the 10 stitches, 10 single stitches. Now last 2 chains में हम फिर से increase करेंगे. So 1 and इसी के अंदर 2. Again next stitch में 1 and same stitch में 2. Now हम split stitch से इसको close करेंगे, second row को close करेंगे. So just like this you close the row and chain 1. So हमारा second row भी complete हो गया है. Now third row. So for the third row you crochet 1 stitch in the first stitch, like now in the second stitch you increase like 1 and in the same row 2. अभी 10 single stitches करेंगे. Okay, now stitch 1 and now increase 1 and 2. Again stitch 1, in the next increase 1 and same stitch 2. Now single and again increase 1 and इसी के अंदर second stitch. ठीक है, अब हम 10 stitches कंटिन्यू करेंगे. सो व्हेन ये राउंड आता है ना तो इसके अंदर हमको कुछ स्टिचेस कहीं पे इंक्रीज़ करनी है. सो जहाँ पे मैं बोल रही हूँ वहाँ पे इंक्रीज़ करना है सो दैट वो एक राउंड नाइस कर्व आए क्लिप में. एंड आई एम ऑल्सो शोइंग यू द रिटर्न इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन. आप वो देख के भी यू कैन फॉलो. अगेन सिंगल स्टिच, इन द नेक्स्ट वन विल इंक्रीज 1 and increase, single stitch and then increase. And now we'll finish with a slip stitch. स्लिप स्टिच हम करते हैं वो फर्स्ट रो से थ्रेड लेके करते हैं, लाइक ऐसे. नाउ चेन. ओके, सो हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. नाउ हम इसके अंदर बैक स्टिचेस करेंगे. विल डू इट इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो ऐसे हम चेन्स पे स्टिचेस करेंगे. सो एज यू कैन सी आई एम गोइंग बैकवर्ड्स बट द टेक्निक इज सेम. जो हम टेक्निक अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं वही टेक्निक है. इट्स जस्ट दैट कि हम पीछे की तरफ अब स्टिचेस करेंगे. सो एक नाइस फिनिशिंग लुक देगा एट द बॉर्डर. वो बॉर्डर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा एंड इट विल लुक नाइस. So just like that you have to complete your this row. Okay, so I have completed this row as well, so you can see it looks really nice. And you cut the thread now and you hide this thread behind the work like this. You randomly hide this thread in any stitch anywhere. You can, like this, you can pass it through different stitches. So it's just to secure the thread and to secure your stitches. We can cut the extra and this one will hide when we stick the clip and all. ठीक है, तो आपका बेस रेडी हो गया है. Now we will make flowers on it. To make the flowers I'm using a green embroidery thread and a needle. So you pass this needle from the center of the stitches where it begin like this and you pass thread. And ये फ्लावर्स के स्टेम होंगे तो इसका कितना लेंथ चाहिए you can put it like this and see कि आपको कितना लॉन्ग चाहिए इसका स्टेम. Okay, so and pass the needle from that
आपको इसके अंदर फ्लावर का सेंटर सेम रखना है, लाइक यहाँ से मैंने फिर से निकाला फॉर द सेकेंड स्टेम. So I want one flower a little longer than the other, like this. ठीक है, अभी आई एम मेकिंग लीव्स जस्ट लाइक दिस. यू कैन सी ना, ऐसे वाले लीव्स बनाने हैं. And it's done. So now I will secure this green thread as well at the back like this. I'll make a knot and hide the thread. Okay, so now my leaves are done. So now I'll make the tulips. ठीक है, उससे पहले मैं इसको क्लिप लगा दूँगी. I'm using this clip and fabric. Like you can use the different material जो use होता है clips and all ये सब में. But I think fabric is also fine. I didn't find any problem. मैं बहुत टाइम से fabric use कर रही हूँ तो इससे कोई problem नहीं हुई. So I'm using a fabric and you make a little cut to pass the clip. And you use this B6000 glue to stick this fabric to the clip first. All nicely. This is to secure the clip and give it a good finishing. ठीक है, after this you glue this complete thing and this will stick to your base like what you just made. इसको अच्छे से stick it in this way so that आपके hands पे भी नहीं लगेगा वो. And put it like this for some time. Okay, now it's dry and it's all nice. You can check it one time if you want. Now we'll make these tulips. So I'm using a pink thread, 2 shades of thread actually. You can make with one, your choice. Now I'm making a magic circle just like this. So I'm showing you very slowly how I did it so you can follow. You pull it through. Now you chain, make it a little tighter. Now chain 3, 1 2 3. Now you have to make 5 double crochets in this circle just like this. Okay, so I have made 5 double crochets. Now I will count 1 2 3 4 5, and in the 5th one you pull the thread through the 5th stitch like this and you slip stitch and you leave a little thread and cut the remaining, and just like that you pull this thread as well and इसको भी थोड़ा सा छोड़ के will cut. To give it a finishing we'll doing this as well. And अभी थोड़ा सा glue लगा के we will stick like this. Here I am using glue gun क्योंकि ये fast होता है. You can also use B6000 यहाँ पे भी, but it's just quicker तो इसलिए glue gun.
For another flower I'm using a darker shade of pink. You can play with the colors here, like it looks nice. I have made in different colors these same clips, so I'll show you at the end. Look, it's all done. It looks very pretty when you wear it. And you can also order, by the way, I'll drop a link of my Instagram account. You can order these clips if you like to buy. Thanks for watching, and please leave a comment that how can I improve it, or you like the video. I like to know your thoughts.